गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है महाकाल कॉरिडोर। आपके आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो पीएम मोदी ने आपको पता है महाकालेश्वर कॉरिडोर को जो है वो इनॉग्रेट किया है मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और जो ये महाकाल महाराज मंदिर परिसर विस्तार योजना, जो ये महाकाल कॉरिडोर है, ये बेसिकली जो महाकालेश्वर टेम्पल है उसकी एक्सपेंशन, ब्यूटिफिकेशन और डीकंजेशन के लिए इनॉग्रेट किया गया है। तो फर्स्ट फेज़ जो है उसको इनॉग्रेट किया गया है और प्लान ये है कि 2.82 हेक्टेयर्स का जो महाकालेश्वर टेम्पल का प्रेमिसेस है उसको बढ़ाकर जो है 47 हेक्टेयर्स कर दिया जाएगा। ठीक है। तो पहले फ़ेज़ में जो है महाकाल लोक कॉरिडोर में नंदी द्वार और पिनाकी द्वार को बनाया जा रहा है, जिसमें पेडेस्ट्रियन कॉरिडोर को बनाया गया 900 मीटर्स के, और ओल्ड रुद्रसागर लेक को जो है वो एक तरह से रिवाइव किया गया। जो सेकेंड फेज़ होगा उसमें ईस्टर्न और नदर्न फ्रंट्स ऑफ द टेम्पल जो है उनको एक्सपैंड किया जाएगा। वह महाकालेश्वर टेम्पल के बारे में देखते हैं। वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग्स है। महाकाल लिंगम जो है वो स्वयंभू है। स्वयंभू मतलब खुद बना है, सेल्फ मैनिफेस्टेड है। और जो इस टाइम पर जो प्रेजेंट फॉर्म में टेम्पल है उसको मराठा जनरल राणोजी शिंदे ने 1734 में बनाया था। और इंडिपेंडेंस से पहले देवस्थान ट्रस्ट इसको टेम्पल को जो है वो लुक आफ्टर करता था, लेकिन उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ उज्जैन के हाथ में ये इसकी मैनेजमेंट आ चुकी है। ठीक है। तो अब जो कलेक्ट्रेट ऑफिस होते हैं उज्जैन डिस्ट्रिक्ट के, वो बेसिकली इसको मैनेज करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हिंदी लैंग्वेज। पॉलिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन जो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस, जो कि होम मिनिस्टर जो है जिसको हेड करते हैं, उन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि जो लोकल लैंग्वेजेस होती हैं उनको प्रेफरेंस मिलनी चाहिए इंग्लिश इन ऑल ओवर इंग्लिश इन ऑल स्टेट्स। ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, जैसे कि आईआईटीज़ में, और ख़ासकर अगर वो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में, तो वहाँ पर हिंदी का यूज़ होना चाहिए। और उन्होंने ये भी बोला है इस कमेटी ने कि यूनाइटेड नेशंस की भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस में हिंदी को डलवाने का हमारा एक मोटिव होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स आपको पता है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें कहा जाता है कि उसमें कहा रिकमेंडेशन है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है या तो ऑफिशियल लैंग्वेज या फिर रीजनल लैंग्वेजेस होनी चाहिए। तो ऑफ कोर्स हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, तो इसलिए उसको भी प्रमोशन के लिए कहा गया है। तो अब इस कमेटी ये कह रही है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यहाँ पर सिर्फ 20 से 30% हिंदी का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इसको जो है 100% यूज़ किया जाना चाहिए। फिर उन्होंने बोला है कि चाहे कोई टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई नॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूशन हो, हिंदी को प्रमोट करना ज़रूरी है, और रिस्पेक्टिव लोकल लैंग्वेज को भी। ठीक है। जहाँ पर ऑफ कोर्स हिंदी जो है जहाँ की प्राइमरी लैंग्वेज नहीं है। तो उन्होंने बोला है कि इंग्लिश को बल्कि हमको ऑप्शनल बनाने की ज़रूरत है, इंग्लिश को प्राइमरी लैंग्वेज बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये भी बोला है कि ऑफ कोर्स ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना है हमने उसको। तो अब इसके हम हिंदी का जो भी आपकी ये जो एक कंट्रोवर्सी इसको देखते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब डिस्कशन कर रही थी कि क्या कोई नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए या नहीं, तो उस टाइम पर बहुत शार्प डिवाइड था कि हिंदी का स्टेटस क्या होएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की गई, जिसमें और जो है इंग्लिश को भी जो है कहा कि हम 15 साल तक रखेंगे। तो ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की गई है, नेशनल लैंग्वेज की बात नहीं की गई है। ठीक है। तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट भी पास किया गया, जिसमें हिंदी और इंग्लिश को यूनियन के ऑफिशियल लैंग्वेजेस बनाया गया। फिर आर्टिकल 343 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो यूनियन की हिंदी होगी देवनागरी स्क्रिप्ट में। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है इंडिया में, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनियन गवर्नमेंट की। तो 8th शेड्यूल में भी हमारे ऑफ कोर्स हिंदी आती है। लेकिन आर्टिकल 344 क्लॉज 1 कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक कमीशन बना सकते हैं कि कैसे हिंदी को जो है वो प्रोग्रेसिव यूज़ किया जाए यूनियन के ऑफिशियल पर्पसेस के लिए, और इंग्लिश को कैसे रिस्ट्रिक्ट किया जाए। फिर आर्टिकल 351 ये भी कहता है कि यूनियन गवर्नमेंट की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हिंदी का स्प्रेड जो है कंट्री में होना चाहिए, ताकि इंडिया का एक कॉम्पोजिट कल्चर की तरह जो है ये हिंदी लैंग्वेज एक तरह से सूत्रधार बनकर सामने आए। अब अडॉप्शन ऑफ 3 लैंग्वेज फार्मूला। अब आपको पता है कि इंग्लिश जो है वो ऑफिशियल यूज़ के लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था जितनी भी स्टेट्स हैं कि हम जब सेंटर और स्टेट आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो इंग्लिश में कम्युनिकेट करेंगे। उसके लिए ही ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट भी पास किया गया था कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो सिर्फ 15 साल ही नहीं, हम इसको आगे भी जो है वो कंटिन्यू रखेंगे और आपस में कम्युनिकेशन इंग्लिश में ही किया करेंगे। लेकिन और आपका एक और भी चीज़ है, एक है आपका नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। तो पढ़ाएंगे क्या?
तो इसमें कहा गया था कि हिंदी जो स्पीकिंग स्टेट्स है वहाँ पर हिंदी, इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज पढ़ाई जाया करेगी, और जो बाकी स्टेट्स हैं वहाँ पर जो हिंदी और इंग्लिश के अलावा जो ऑफिशियल रीजनल लैंग्वेज होगी वो पढ़ाई जाएगी। लेकिन अभी भी जो है आपको पता है, जैसे तमिलनाडु है वहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल है, तो वो तमिल और इंग्लिश ही पढ़ाते हैं, हिंदी को वो नहीं पढ़ाते हैं। तो ये एक तरह से हिंदी जो है कई स्टेट्स इसको मानती हैं कि हिंदी आप हम पे इम्पोज नहीं कर सकते हो। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, कर्दिश पीपल। ये आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपको पता है प्रोटेस्ट चल रहे हैं ईरान में, क्योंकि वहाँ पर एक यंग ईरानियन कर्दिश वुमेन को जो है वो मार दिया गया था ईरान की मॉरलिटी पुलिस ने। एनीवेज हमको टॉपिक उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है कंट्रोवर्सी में, बट हमें पता होना चाहिए कर्ड्स हैं कौन। तो ये मुस्लिम एथनिक ग्रुप को बिलोंग करते हैं। ये एक ऐसी लैंग्वेज बोलते हैं जो कि फ़ारसी लैंग्वेज से रिलेटेड है। ये आपके आर्मीनिया, इराक, ईरान, सीरिया और टर्की में जो है वो फैले हुए हैं। जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी तो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इनको प्रॉमिस किया था टर्क्स को कि हम आपको जो है एक होमलैंड बनाकर देंगे मिडल ईस्ट के अंदर। फिर ट्रीटी ऑफ लॉसेन भी साइन हुई थी 1924 में, जिसमें कर्ड्स को कहा कि उनको न्यू नेशन बना के दिया जाएगा मिडल ईस्ट में। लेकिन अभी भी 30 मिलियन कर्ड जो हैं वो आपके मिडल ईस्ट में अलग अलग जगह पर फैले हुए हैं, जिसमें से हाफ ऑफ द कर्ड्स हैं वो टर्की में लोकेटेड हैं। इराक अकेली ऐसी कंट्री है उस पूरे रीजन में जिसने ऑटोनॉमस कर्डिश रीजन को बनाकर दिया है और रिकॉग्नाइज़ किया है इराकी कुर्दिस्तान नाम से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है और सिक्योरिटी के लिए भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने 4th जो है सेट ऑफ स्विस बैंक अकाउंट डिटेल्स जो है वो स्विट्ज़रलैंड से हासिल की है। जनवरी 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एग्रीमेंट हुआ था ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए। पहली बार इन्फॉर्मेशन 2019 में आई थी और अब ये चौथी बार इन्फॉर्मेशन स्विस बैंक से आ रही है। लेकिन इसमें ये कहा गया है, ऑफ कोर्स याद रखो, इसमें कहा गया है कि हम ट्रांसपेरेंसी लेके आना चाहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना चाहते हैं। उसके लिए ये एग्रीमेंट साइन किया गया था। जो इसमें इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है उसका क्राइटेरिया या उसकी गाइडलाइंस या पैरामीटर्स जो है वो कौन सेट करता है, OECD। याद रखो, ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ टैक्स पर्पसेस के लिए जो है OECD या फिर स्विट्ज़रलैंड जैसे इस केस में शेयर करता है, किसी और पर्पस के लिए शेयर नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट के पास जो है जानकारी आ रही है, ये गवर्नमेंट उसको मिसयूज़ करे। ठीक है, सो इंडिया भी क्योंकि इस एग्रीमेंट का पार्ट है, तो इंडिया को पास भी जो ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है वो 78 कंट्रीज़ के साथ शेयर करनी पड़ती हैं, और इंडिया को इन रिटर्न में 107 कंट्रीज़ से ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडियन स्पेस इकोनॉमी। आपके इकोनॉमी के टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन स्पेस इकोनॉमी जो है वो $13 बिलियन तक पहुंच जाएगी बाय 2025, ऐसा अर्नस्ट एंड यंग और इंडियन स्पेस एसोसिएशन की जो है रिपोर्ट के मुताबिक कहना है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट कह रही है कि जो स्पेस लॉन्च सेगमेंट है वो 13% की ग्रोथ जो है वो देख रहा है। सैटेलाइट सर्विसेज और एप्लीकेशन सेगमेंट जो है वो इस 36% इस ग्रोथ का पार्ट होंगे। सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटी जो है इंडिया में, जो 2020 में $2.1 बिलियन की थी, वो बढ़कर 2025 में $3.2 बिलियन पहुंच जाएगी। तो ये इंडियन स्पेस एसोसिएशन है क्या? 2020 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। एक प्रीमियर इंडस्ट्री एसोसिएशन है स्पेस और सैटेलाइट कंपनीज़ की, और ये एक इंडिपेंडेंट सिंगल विंडो एजेंसी देती है इंडस्ट्री आपको इंडस्ट्री को, जिससे कि आपके स्टार्टअप्स या प्राइवेट सेक्टर जो है वो आपके गवर्नमेंट एजेंडा के बारे में पता लगा सकें और किस फील्ड में जो है स्पेस की सेक्टर में इंटरवेंशन की ज़रूरत है, कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, वहाँ पर वो एंगेज कर सकें। ठीक है, वहाँ पर वो अपना जो है वो कंट्रीब्यूशन दे सकें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। आपके सोशल इश्यूज़ के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है कि 10 अक्टूबर को हर साल वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। तो इस बार लैंसेट की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा है कि 90% लोग जो मेंटल हेल्थ कंडीशन से जी रहे हैं वो कहते हैं कि उनको स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन फील होता है, और 90% जो है इस सर्वे में लोगों ने बोला है कि मीडिया एक मेजर रोल प्ले कर सकता है इस स्टिग्मा को रोकने के लिए। ठीक है, 80% लोग ये कह रहे हैं कि स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन की वजह से उनकी जो कंडीशन है वो वर्स हो जाती है दैन द कंडीशन इटसेल्फ। ठीक है, सो अब वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के बारे में देखते हैं। ऑफ कोर्स 10 अक्टूबर को हर साल जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। पहली बार 1992 में इसको ऑब्जर्व किया गया था वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ द्वारा। ठीक है, इस साल का थीम है मेक मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फुटबॉल फॉर स्कूल्स प्रोजेक्ट।
फीफा जो है आपके ऑफ कोर्स ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस और आपके गवर्नेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो फीफा जो है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साथ मिलकर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर फुटबॉल फॉर स्कूल्स प्रोजेक्ट कंट्री में लेकर आया है। ये एक एम्बिशियस प्रोग्राम है फीफा का, जो ग्लोबल लेवल पर यूनेस्को के साथ कोलैबोरेट करके बच्चों में एजुकेशन, डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट जो है वो करना चाहते हैं 700 मिलियन चिल्ड्रन की वर्ल्ड वाइड। तो ये प्रोग्राम जो है आपका सारे के सारे 700 प्लस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया में इसको जो है वो लॉन्च किया जाएगा। नवोदय विद्यालय समिति जो है नोडल एजेंसी बनेगी ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और इसको प्रोग्राम को जो है वो इम्प्लीमेंट करेगी। ठीक है, सो ऑफ कोर्स ये स्पिरिट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो कर रहा है। हम स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड लर्निंग कंट्री में लेके आना चाहते हैं, उसी को ही कॉम्प्लीमेंट करता हुआ एक प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है B20 कॉन्फ्रेंस। ये आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो DPIIT जो है उन्होंने रिसेंटली CII के साथ मीटिंग की है कि B20 इंडोनेशिया ग्लोबल डायलॉग में हमारा क्या एजेंडा होना चाहिए। तो बेसिकली अब हो क्या रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडस्ट्री बॉडीज से पूछ रही है कि जब हम B20 इंडोनेशिया जो कि एक आपका ग्लोबल डायलॉग होता है बिज़नेस के ऊपर, उसमें हम जाकर क्या एजेंडा रखें और हम क्या पॉलिसी रिकमेंडेशंस दें B20 इंडोनेशिया में। तो B20 क्या है? G20 जो आपका डायलॉग ऑफिशियल डायलॉग फोरम है G20 का, ये ऑन ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी। तो इसमें होता क्या है कि गवर्नमेंट जो है बिजनेस कम्युनिटीज़ के साथ जो है वो डिस्कशन करते हैं ग्लोबल लेवल पर G20 मीटिंग्स में। और उसी के लिए जो है ये CII के साथ DPIIT मीटिंग कर रहा है कि हम जब वहाँ पर जाएंगे G20 में इंडोनेशिया में B20 की मीटिंग के लिए, तो हम एक तरह से अपना पर्सपेक्टिव को अलाइन कर लेते हैं। वहाँ पर जाके हम अपनी पॉलिसी रिकमेंडेशंस जो है वो एक दूसरे को साथ मिलकर कॉम्प्लीमेंट करते हुए हम जो है अपनी पॉलिसी रिकमेंडेशंस देंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। सोशल इश्यूज़ के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड जो है वो आपका अक्टूबर 11 को सेलिब्रेट किया जाता है और ये आपके अवेयरनेस जनरेट करता है इम्पॉर्टेंस एंड पोटेंशियल ऑफ गर्ल्स के ऊपर, और जो भी गर्ल्स चैलेंजेस फेस करती हैं उसको एड्रेस करता है ये, और गर्ल्स की एम्पावरमेंट के ऊपर भी काम करता है। ठीक है, सो 2022 जो है वो 10th एनिवर्सरी है इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड की। इस साल का थीम है आवर टाइम इज़ नाउ, आवर राइट्स आर फ्यूचर। पहली बार इसको जो है बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन इन 1995 में सजेस्ट किया गया था कि एक राइट्स ऑफ गर्ल्स को एडवांस करने के लिए एक ऐसा दिन होना चाहिए। लेकिन 2011 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया और अक्टूबर 11 को इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड जो है वो अडॉप्ट किया। पहली बार इसको 2012 में ऑब्जर्व किया, तो इस साल जो है 2022 में ये 10th एनिवर्सरी है। Okay, so now let us see all these topics in English. So the first topic is Mahakal Corridor. So this topic is important for your art and culture section. So recently PM Modi has inaugurated the Mahakaleshwar Corridor, which has been constructed in Madhya Pradesh Ujjain district. So of course you know that this is a plan for expansion, beautification and decongestion of Mahakaleshwar temple, and its official name is Mahakal Maharaj Mandir Parisar Vistar Yojana, and the plan is to expand the 2.82 hectares of Mahakaleshwar temple to 47 hectares. It will be developed in two phases. The first phase has been inaugurated recently, and the first phase development of Nandi Dwar and Pinaki Dwar would be done, which are the two entrances, and a 900-meter pedestrian corridor has also been constructed. Also, the Rudrasagar lake, the old Rudrasagar lake, has been revived. And in the second phase, the eastern and northern fronts of the temple would be expanded. So what is Mahakaleshwar temple? Of course, it is one of the 12 Jyotirlingas, and which are the most sacred abodes of Lord Shiva. And this Mahakal Lingam is believed to be Swayambhu, which means that it is self-manifested. Self-manifested means it has emerged on its own and it is not artificially constructed. The temple is in its present form has been built by Maratha General Ranuji Shinde in 1734, and initially before independence it was managed by a Devasthan trust, but it was replaced by Municipal Corporation of Ujjain after independence. Currently the Collectorate Office of Ujjain district manages the administration of this temple.
So the next topic is Hindi language. This topic is important for our polity section. Recently, a parliamentary committee on official languages, which is headed by Union Home Minister, has recommended that local languages should be given preference over English in all states. And this committee has also suggested that the medium of instruction in higher educational institutions like IITs, especially in Hindi-speaking states, should be Hindi. And Hindi should be promoted as one of the United Nations official languages also. So this committee in its 11th report has said that as per the national education policy, the medium of instruction should be either official or regional languages. This committee has also observed that Banaras Hindu University, Delhi University, Jamia Millia Islamia, Aligarh Muslim University, here only 20 to 30% of Hindi Hindi language is being used, whereas it should be 100%. It has also observed that in all technical and non-technical institutions, Hindi can be used, and apart from that, if the state is a non-Hindi speaking state, then their respective local language should be the medium of instruction. And the basic focus is that we should constrict or we should restrict the use of English, and which should be made optional. Committee has also recommended that Hindi should be made as one of the official languages in the UN. So that would be, of course, a matter for the MEA. Anyways, let us also see the debate of Hindi since Constituent Assembly. So you know that Constituent Assembly was sharply divided on the issue of Hindi status. So that's why, you know, because of this opposition by non-Hindi speaking states, Constitution did not adopt any national language, but it only adopted the official language. And it was also said that English will be used for the next 15 years only. But Official Languages Act was passed in 1963, establishing both Hindi and English as the Union's official languages. Article 343 of the Constitution says that official language of the Union shall be Hindi in Devanagari script. So there is no national language for India, but there is just official language of the Union government. Hindi is also a part of 8th schedule of the Constitution. As per Article 344 Clause 1, the President of India can appoint a commission to make recommendations for the progressive use of Hindi for official purposes of the Union. And as per Article 351, the Union government has the responsibility to promote the spread of Hindi, so that it becomes a medium of expression for India's composite culture. Adoption of three-language formula. Let us also see what is this. You know that in 1959, central government gave assurance to the states that English would continue to be in official use as the language of communication between center and states. For that, Official Languages Act was also passed regarding the continued use of English, but there were concerns by several states that Hindi could be imposed in them, if just English would be the medium of communication and Hindi would be the medium of communication by the Union government, then of course their future employment prospects in the Union government would be hampered. To address this problem, the first national education policy in 1968 proposed the three-language formula, in which the Hindi-speaking states would continue to teach Hindi, English, and one regional language, and the non-Hindi-speaking states would start Hindi, English, and their official regional language in other states, in those states. But of course, you know that many states like Tamil Nadu, they are opposed to the three-language formula because they do not want to teach Hindi, because they think that it is an imposition on their culture. So anyways, the next topic is Kurdish people. This topic is important for your international relations. So nationwide protests have erupted over a death of a young Iranian Kurdish woman in the custody of Iran's morality police. So we do not need to go into the controversy, but we have to see who are the Kurds. So Kurds are members of a large, predominantly Muslim ethnic group. They speak a language which is related to Farsi, and they live mostly in the mountainous regions of Armenia, Iraq, Iran, Syria, and Turkey. After the First World War, Western powers promised Kurds that they will be given their homeland through this agreement known as the Treaty of Sevres. But only in 1924 this treaty was ratified, and it was renamed as Treaty of Lausanne.
and it divided the Kurds among the new nations of the Middle East. So now 30 million Kurds are living across the region, but half of them are constricted to Turkey. But only out of all these countries, Iraq is the only country which has established an autonomous Kurdish region, which is known as Iraqi Kurdistan. Yet, rest of the countries are yet to provide them with a separate state or a separate territory. So the next topic is automatic exchange of information. This topic is important for the governance section. So India and also your security section. India has received the 4th set of Swiss bank account details of Indian nationals and organizations as part of an annual information exchange. You know that in January 2018, the government of India entered into an agreement with Swiss government regarding this exchange of information. The first such exchange happened with India in 2019. But it is not a free flow of exchange, and it is not just between India and Switzerland. Rather, this entire exchange is guided by the guidelines and parameters set up by OECD countries, OECD grouping. So the aim is to bring transparency and restrict money laundering, and it has been made clear that this information is only being shared for tax purposes, and the government of India cannot use it for any other purpose. India also in return has to share a bulk of its financial and banking information with 78 other countries, and in return we get the same information from 107 countries as per the OECD umbrella of automatic exchange of information agreement. So the next topic is Indian space economy. This topic is important for our economy section. So Indian space economy is set to reach 13 billion by 2025. This figure is being given by Ernst & Young and Indian Space Association. So as per this report, the space launch segment would grow at about 13%. The satellite and services and application segment would constitute 36% of this space sector by 2025. Satellite manufacturing opportunity was just $2.1 billion in 2020, but it will reach $3.2 billion by the end of 2025. Then what is Indian Space Association? Of course, it was established in 2020, and it's the premier industry association of space and satellite companies. So basically, this industry association is giving an independent and single window so that space sector can be opened up for startups and private sector. So the next topic is World Mental Health Day. So this topic is important for your social issues. On October 10th, we celebrate this World Mental Health Day. On this day, the Lancet has released a new report calling for radical action to end stigma and discrimination in mental health. So this report has observed that 90% of the people who are living with mental health conditions, they have been impacted by stigma and discrimination. 80% of them have said that the stigma and discrimination makes their condition worse. 90% of those surveyed have also felt that media can play a major role in reducing this stigma. So you know that it is celebrated, this World Mental Health Day is celebrated every year on 10th of October. First time it was observed was in 1992, and this year the theme is Make Mental Health and Well-Being for All a Global Priority. So the next topic is Football for Schools project. So this topic is important for the governance section. So FIFA is in a partnership with All India Football Federation and also with the support of UN government. They have launched this Football for Schools project. Actually, at the global level, this is an ambitious program run by FIFA in collaboration with the UNESCO, and the aim is to contribute to the education, development and empowerment of more than 700 million children. And in India, this program will be extended to all the 700 plus districts in the country, and Navodaya Vidyalaya Samiti will be the nodal agency for the implementation of this program as on behalf of the Ministry of Education. So this is in consonance with our national education policy, which seeks to promote sports integrated learning. So the next topic is B20 conference. This topic is important for our international relations. So DPIIT has recently hosted a conference with CII so that they can arrive or they can align their perspectives regarding the policy recommendations
that the government and the Indian industry shall make to the B20 Indonesia. So what is B20? B20 is basically the official G20 dialogue forum with the global business community, in which the G20 member states and their respective business communities interact with each other and present an agenda for that particular G20 summit. So basically it gives concrete actionable policy recommendations on the priorities, and the aim is to spur economic growth and development in the world. So the next topic is International Day of the Girl Child. This topic is important for your social issues. So on 11th of October, we celebrate this International Girl Child Day. The aim is to raise awareness about the importance and potential that girls hold as the future of our society, and it also addresses the challenges that girls face, and also to promote girls' empowerment and fulfillment of their human rights. So this year it is the 10th anniversary of this day, because this was observed for the first time in 2012. This year the theme is "Our time is now, our rights are future." So the history that this day traces back its origin to the Beijing Declaration and Platform for Action in 1995, which proposed an action plan to advance the rights of the girls. But only in 2011, the United Nations General Assembly passed a resolution to that effect, and since 2012, this day has been commemorated annually. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.